Okay, now we are going to discuss dual nature of matter. Dual nature of matter, it carries 3 to 4 marks. Okay, important is the terminology. Second thing is factors on which one depend upon. Third is graphs, Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. Next is next one is de Broglie wavelength. Okay, so we are going to discuss all these things. What are the different terminology? Look at here. According to wave theory, intensity directly proportional to square of the amplitude, whereas according to particle theory, energy depends upon frequency. E equal to h nu. What is E? E equal to h nu. Remember, the where light comes or any radiation comes, large number of photons comes. Each and every light or radiation consists of large number of photons. What are the properties of photon? The energy of photon is h nu or hc by lambda. The photon moves with speed of light. Photon cannot exist at rest. Okay. The basic difference is when intensity increases, number of photons incident increases. Suppose intensity बढ़ गया तो पहले 1000 फोटोन आता था, अब 1000 जाकर 2000 4000 फोटोन आएगा. But all the photons have same energy until and unless they have equal, the frequency or the wavelength remains same. Then properties, the photon, it is electrically neutral, it is neither deflected by electric nor by magnetic field, energy is h nu. Okay, now one is joule, another is electron volt, both are unit of energy. How can you convert electron volt to joule? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. If it is mega electron volt, mega means 10 to the power 6, so it will be 10 to the power minus 13 joule. Okay, then electron emission. When energy provided to electron, it is emitted from the atom. Now come to field emission, thermionic emission and photoelectric. Here we are going to discuss about photoelectric emission. Emission of electron when light or radiation of suitable frequency incident on it. Emission of electron due to light or radiation is known as photoelectric effect. Okay, now what are the different terminology? Photoelectric effect, is it clear? Then work function. Each and every metal has work function. Okay, work function, it is W is equal to h nu naught, hc by lambda naught. The work function depends upon, clearly, work function only depends upon nature of the metal. Suppose sodium metal and magnesium metal, they have different work function. For sodium it is fixed. You may give red light, you may give gamma ray, you may give any radiation of any intensity, any frequency, but work function remains same. Okay. Work function, threshold frequency and threshold wavelength, these are the characteristics of a photosensitive metal. What are the relation between them? W is equal to h nu naught is equal to hc by lambda naught. What is nu naught? Threshold frequency, minimum frequency for which the emission takes place. What is lambda naught? Maximum wavelength for which photoelectric emission, maximum wavelength for which photoelectric emission takes place. When frequency is minimum, lambda naught is maximum. Okay, उससे ज़्यादा होगा तो emission नहीं होगा, लेकिन frequency के लिए ज़्यादा होगा तो emission होगा. Is it clear? Okay, now
one metal has 2.4 electron volt, another metal has 3.2 electron volt. This is metal A, this is metal B. Okay. Now, which has greater threshold frequency? Which has greater threshold frequency? Greater the threshold frequency, more the work function. तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ग्रेटर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मोर इज द वर्क फंक्शन. लेकिन पूछा जाएगा ये दोनों से किसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा? 2.4 का. इट इज इनवर्सली. ओके. So these three only depends upon nature of the metal. They do not depend upon nature of the light or radiation incident. Is it clear? Okay. Now तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया. देखो सोडियम हैज वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम सरफेस. ओके, ठीक है ना. सोडियम एंड पोटेशियम एक्सपेक्ट. अच्छा, कैन यू टेल मी आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम व्हिच हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन एंड व्हाई? सोडियम 281, पोटेशियम 2881. देखो इसका 4 सेल को चला गया, तो 4 सेल को चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होगा. सो पोटेशियम मस्ट हैव लेस वर्क फंक्शन व्हेयरएज सोडियम हैज मोर वर्क फंक्शन. ठीक है. देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. नाउ सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है. देखो यू कैन फाइंड द न्यूमेरिकल इन 2 ways. As like in this question, the wavelength is 1100 nanometer, suppose. Now question is, suppose it is like this. The wavelength is 200 nanometer, 330 nanometer and 250 nanometer, 400 nanometer. 4 wavelengths are given. Okay. A metal having some work function is given. Suppose work function is given. You have to check which metal shows photoelectric effect. तो एक मेटल दिया हुआ है तो आप क्या करो, उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही निकाल दो. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे? W इक्वल टू AC बाई वर्क फंक्शन इज इक्वल टू AC बाई लैम्डा नॉट. तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू AC बाई कर लेंगे, हो जाएगा. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जिसका ज़्यादा होगा वो एमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम है ना. ये इससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, इससे कम होगा तो एमिशन होगा ना. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देखो, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन द फोटो करंट इज देयर. व्हाट इज द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स? नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. कितना देने से इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा. तो बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखिए मैंने आपको इक्वेशन में बता देता हूँ. देखिए सपोज दिस इज अ फोटो सेंसिटिव मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W. द लाइट और रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट having energy E is equal to h nu, and now the electron emitted. The electron has some kinetic energy. What is the relation between these three? Kinetic energy is equal to h nu minus work function. We can say saving is equal to income minus expenditure. So income, yes, it is K max. You are right. It is K max. Equation is K max. It is maximum kinetic energy. So what happened? When photon incident on the metal, photon provides total energy to the concerned electron. मतलब फोटोन अपना पूरा एनर्जी एच न्यू दे देता है. जब एच न्यू एनर्जी दिया, उसका डब्ल्यू एनर्जी खर्चा हो गया. क्या करने में? जस्ट मेटल से बाहर निकलने में. तो बाकी जो एनर्जी बच गया उसमें वो चला गया. तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा कितना? ना काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू. इज इट क्लियर? ना दिस K max इज इक्वल टू E V नॉट. V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर्स? बच्चे बताओ. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन nature of the metal, and देखो W depends upon nature of the metal, and frequency or wavelength of the radiation. Okay, it doesn't depend upon intensity. Kinetic energy doesn't depend upon intensity.
So similarly, the stopping potential also depends upon nature of the metal and wavelength or color of the light. Okay, now there are some observations. Einstein photoelectric effect. That is a very easy question. The stopping potential for a metal is 1.5 volt. What is the K max? K max is 1.5 into E, so it is easily 1.5 electron volt. This is the second method. If stopping potential is 1.5 volt, then work function is 1.5 kinetic, maximum kinetic energy is 1.5 electron volt. You can easily convert it to joule. But if it is asked to write in joule, then you can write. Otherwise, 1.5 electron volt is also correct. Now tell me, if maximum kinetic energy is 5 electron volt, so what is stopping potential? 5 volt. Okay. Maximum kinetic energy of photoelectron is 2 electron volt. What is the stopping potential? It is 2 volt. Is it clear? Now come to Einstein photoelectric effect. This is a glass tube, evacuated glass tube. Now light or radiation incident on this photosensitive metal. The electrons emit. The electron reach the anode. So current flows through the circuit. Okay, there is a commutator just to change the polarity. कभी इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं तो कभी नेगेटिव कर सकते हैं. तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सेकेंड थिंग हियर रियोस्टैट टू चेंज द वोल्टेज. ठीक है, तो क्या हुआ इसमें बताओ. रेडिएशन आकर इंसिडेंट हो गया तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया. ठीक, और इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज द फोटो करंट चेंजेस. ओके, हियर आई पी इज फोटो करंट, आई इज इंटेंसिटी. ब्राइटनेस बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा. व्हाई? व्हेन ब्राइटनेस और इंटेंसिटी इंक्रीजेस, मोर एंड मोर फोटॉन्स इंसिडेंट, सो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट, तो फोटो करंट इंक्रीजेस. सेकेंड, दिस इज द ग्राफ. लुक एट हियर, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज एंड अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट. दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट. Question is, why does the current become saturated? The current became saturated because, yes, suppose सोचिए यहाँ से 5000 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन का सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसमें 2000 यहाँ पहुँच रहा है. अब मैं वोल्टेज बढ़ाया तो और थोड़ा अट्रैक्ट किया, 3000 पहुँचा, 4000 पहुँचा, 5000 पहुँचा, तो और कहाँ से लाएगा? वो तो 5000 प्रोडक्ट ही हो रहा है, 5000 से ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. That's why maximum 5000 electron will be collected. That's why it became saturated. Yes, if you increase the intensity बढ़ाओगे तो और ज़्यादा फोटोन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा. So saturation current increases. If intensity increases, more and more photon incident, more and more electron emit, so photo current increases. Okay, saturation क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गया और तो बचा ही नहीं. तब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तब ना. ओके, दैट्स व्हाई द करंट रिमेन कांस्टेंट. इज इट क्लियर? बट इफ यू मेक द वोल्टेज नेगेटिव, अब नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रॉन को अपोज कर देगा, तो थोड़े देर के बाद करंट जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आएगा. व्हाट इज दिस पोटेंशियल नोन एज? स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, दिस वोल्टेज इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस करंट इज सैचुरेशन. तो रिमेंबर, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. ध्यान दीजिए, आप इंटेंसिटी अलग अलग किए हैं, फिर भी सैचुरेशन करंट सेम है. नहीं, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस. पहले मुझे बताइए, व्हाट आर टेकन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस? Anode potential, photo current. Okay, suppose the graphs are like this. These are the four waves, four radiation, 1, 2, 3, 4. Question is, which two pair of radiations have same intensity? इंटेंसिटी मतलब आप ये देखोगे, ये हाइट,
इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो किसका सैचुरेशन करंट सेम है देख लिया करो, 3 and 1. 1 and 3, then 2 and 4, तो they have equal intensity. If I ask which have equal frequency, देखो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो यहाँ किसका किसका सेम है, 4 3 then 1 2, they have equal frequency. Is it clear? Okay. Now so you have to remember 4 graphs. अच्छा, what does this graph represent? This graph represents, देखो this is threshold, देखो this is frequency, this is stopping potential. Okay, so the stopping potential increases for a minimum value. This is known as threshold frequency. For a given metal, there exists a minimum frequency known as threshold frequency, below which no photoelectric emission takes place. तो minimum frequency है threshold frequency, उससे कम में emission होगा ही नहीं, तो stopping potential कहाँ से आएगा? Okay, so this is the graph. And fourth observation is, it is an instantaneous process. What is instantaneous? Now when photon incident, photon transfers total energy to the concerned electron. वो इलेक्ट्रॉन को सारा एनर्जी दे देता है, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गया इसलिए जंप करके भाग जाते हैं। तो व्हाट आर द 4 graphs? बताइए। फर्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस, यस बोलिए, दिस इज intensity, whereas this is photo current. Second graph is, yes, Same as stopping potential and intensity. इसमें क्या सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग हो गया लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, उल्टा कर देंगे अभी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यस फ्रीक्वेंसी सेम, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, गलत बोला, यस फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इंटेंसिटी सेम, आई रिमेन सेम, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, तो ये न्यू टू होगा बच्चे, न्यू वन होगा, ठीक है। आई पी एंड वोल्टेज, लास्ट वन इज लाइक दिस, दिस इज वी नॉट, दिस इज न्यू, ये पॉइंट क्या है, न्यू नॉट। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फ्रॉम दिस ग्राफ, first question, from this graph how can you find Planck's constant, how can you find work function, you may find the question. Equation is E V naught is equal to h nu minus work function. So what is V naught? H by E into nu minus W by E. It is similar to y equal to mx plus c. What is slope here? H by E. So slope is equal to h by e. Can you find slope? H is equal to what? Slope into e. In this way we can find what? Planck's constant. Second thing, how can you find W? Y intercept, c is equal to W by e. So W is equal to y intercept into e. In this way you can find. What is y intercept? देखो, if you extend it and extend this graph, it will meet at a point. This is y intercept, which is equal to W by E. Okay, is it clear? Second thing is, suppose there are two metals. This is one of the important question from this chapter. There are two metals, metal 1 and metal 2. This is nu, this is V naught. Which metal has greater work function? अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताए तो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? नहीं दिख रहा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? M2 के लिए बड़ा है, नहीं है, ये पॉइंट आगे आ रहा है ना, तो ये बड़ा है। तो नेगेटिव से मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। और आपको मालूम है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। तो किसका था वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा? M2 का, W2 का। ना अब पूछेगा, सपोज लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स M1 एंड M2, इन व्हिच केस Ke max इज मोर? Ke max इज इक्वल टू h न्यू माइनस W। देखो
एच न्यू तो सेम है, जिसका डब्ल्यू ज़्यादा होगा उसका के मैक्स, ये माइनस हो रहा है ना। देखो ये एच न्यू कॉन्स्टेंट है, इससे डब्ल्यू माइनस करना है, जब बड़ा नंबर माइनस करोगे तो बचेगा छोटा। तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, m1 या m2? m1 होगा, क्योंकि m2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा हो गया ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इसका वर्क फंक्शन कम है तो ये भी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जिसका ज़्यादा होगा वो भी तो हो सकता है। ज़्यादा आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखेगा ना, हाँ। वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। अभी आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया, ओके। तुम जैसे कह रहे हो वैसे तरीके से होगा। ये एक सेम ये ले लो, अब देखो अब हुआ फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इट हैज लेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट हैज मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी होगा लेकिन इस तरीके से, ओके। नाउ टेल मी व्हाई ग्राफ्स आर पैरेलल, यू सी द ग्राफ्स आर पैरेलल। Why graphs are parallel? Because they have equal slope. Slope is equal to h by e. मालूम है? That's why graphs are parallel. Is it clear? Now. Yes, these are the question. Then you have to solve numerical based upon this. Okay. Like what are the different formulas? Just I discussed. Then you have to apply. Yes, this question has already discussed. Yes, this is another important question. For a particular metal, the metal has threshold frequency f0. When radiation of frequency 2f0 incident, the maximum speed of electron is v1, maximum speed. And when 5f0 incident, the maximum speed is v2. Compare their velocity. But here question is about velocity. So first you have to modify the equation. मैं सारा फॉर्मूला एक साथ बता देता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई, ओके, द आइंस्टाइन फोटोलिटी इक्वेशन इज के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ओके। दिस इज वर्क फंक्शन, इजंट इट? थर्ड, व्हाट कैन यू राइट अबाउट के मैक्स? It is equal to half m v max square is equal to e v naught. H nu can be replaced by h c by lambda. Okay. This is h nu naught. This is h c by lambda. Okay. So now you can replace. So in that question, it is about maximum speed. So how you can modify this equation? Half m v max square is equal to h nu minus h nu naught. So half m v max square is equal to h nu minus h nu naught is f naught. In the question it is given. Now come to for fast metal. When the velocity is v1, the frequency is 2f naught. So equation 1. First case. Half m v1 square is equal to h into 2f naught minus hf naught. Because in first case, what is the frequency? 2f naught. So how can you write the equation? Half m v1 square is equal to 2hf naught minus hf naught is hf naught. Equation 2. Case 2. In case 2, velocity is v2, whereas the frequency is 5f naught. So half m v2 square is equal to h 5f naught minus hf. It is how much? 4hf naught. So now take the ratio of these two, you can solve it. Okay. So this is in terms of frequency. The question may be asked in terms of wavelength. कैसे? ऐसा बोलेगा कि 2 लैम्बडा नॉट के लिए वेलोसिटी v1 है, 5 लैम्बडा नॉट के लिए वेलोसिटी v2 है। अब रेशियो लिखो। तो यू हैव टू राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा नॉट। कैसे? के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू बाई एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा नॉट। तो फर्स्ट केस में लैम्बडा केस क्या पुट करोगे? 2 लैम्बडा नॉट। इक्वेशन लिखोगे।
सेकेंड केस में लैम्डा के जगह पर क्या यूज करोगे? 5 लैम्डा lambda नॉट, इक्वेशन लिखोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे और कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक डिवाइड इट. ओके, इसमें न्यूमेरिकल है, इसको यूज करके करोगे. नाउ कम टू डुअल नेचर ऑफ मैटर. Each and every matter in the universe has both particle nature as well as wave nature. वेव जैसे लाइट का वेव भी है, पार्टिकल भी है. कार जा रहा है, उसका पार्टिकल ज़्यादा है, वेव नेचर कम है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका वेव नेचर हम नोटिस कर पाएंगे. तो द वेव एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मैटर वेव. So what is the wavelength of matter wave? Lambda is equal to h by p, that is h by mv. This is known as de Broglie wavelength. Okay, v क्या है? Velocity. It can be converted to kinetic energy. How mv can be converted to kinetic energy? Look at here. Remember all the formulas. Very simple. Lambda is equal to h by p, h by mv. H by momentum can be written as square root 2m kinetic energy. If it is a charged particle, kinetic energy is charge into v. What v is this? Velocity. This is voltage, yeah, potential difference. And especially for electron, if it is electron, we know mass of the electron, charge of the electron. So lambda is equal to 1.227 by square root v nanometer. So these are only the formulas. Only this formula. Okay. One of the important graph is like this. Lambda versus 1 by square root v. V is voltage. देखिए, lambda is equal to h by square root 2m q v. तो lambda proportional या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट वी, इजंट इट. और ये पूरा 1 बाई वी को यहाँ लिख दिया, 1 बाई रूट ओवर वी. और बताए ग्राफ कैसा होगा? जब पूरा लिखा जाता है तो इसके साथ डायरेक्टली हो जाता है. ओके, ठीक है, पूरा आ गया तो डायरेक्टली. इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन जरूर कोई दो चार्ज पार्टिकल कंपेयर के लिए पूछेगा. अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्रिटियम. Okay, these are the main particles. Alpha particle is represented by He24. बताइए चार्ज कितना है? 2. मास कितना है? 4. प्रोटॉन रिप्रेजेंट बाय H11, चार्ज 1, मास 1. ड्यूटेरॉन H12, चार्ज इज 1. मुझे नीचे क्या लिखा रहता है? चार्ज, एटॉमिक नंबर, दैट इज इन चार्ज. तो मास इज 2 एंड ट्रिटियम इज H13, चार्ज इज 1, मास इज 3. देन यू कैन इजीली कंपेयर. कैसे जानोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सपोज दे दिया प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल वेलोसिटी, व्हिच फॉर्मूला इज यूजफुल? h by mv. सपोज द क्वेश्चन इज दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, तो h by square root 2m qv. Suppose they have equal kinetic energy, h by square root 2m eq. ये तो बात. ओके, अब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया. सपोज फॉर इलेक्ट्रॉन द वोल्टेज इज 100 वोल्ट. बताइए व्हाट इज इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? नहीं, व्हाट इज इट्स de Broglie wavelength? 1.227. लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट v. 1.227 by square root 100. What is square root of 100? 10. तो 0.1227 यूनिट तो बोलो, नैनोमीटर. क्लियर हो गया? ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, 1 by square root v and lambda. These are two charged particles q1 and q2. It is given one is proton, another is alpha particle. Identify them. कौन है इसमें? प्रोटॉन कौन है? Identify. Remember, any question based upon graph can be solved either by slope or by area. यहाँ पर हम slope लेंगे. अच्छा, can you tell me the formula for lambda? h by root over 2m q v. Yes. Slope is equal to
Remember, slope is dy by dx. Y by x. What is y here? Lambda. X is 1 by square root v. तो लैम्डा का पूरा फॉर्मूला लिखो, h बाई स्क्वायर रूट 2m क्यू भी इंटू स्क्वायर रूट भी बाई 1. तो रूट भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? h बाई स्क्वायर रूट 2m क्यू. तो इसका मतलब जिसका m क्यूब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उसका स्लोप कम होगा इन्वर्सली. तो चलो हम चेक करते हैं. मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन. मास भी 1, चार्ज भी 1 यूनिट. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 1. मास तो 4 होता है और चार्ज 2 होता है, तो 8 हो गया. एम क्यू किसका ज़्यादा है? अल्फा के लिए. जब अल्फा के लिए एम क्यू ज़्यादा हो गया तो स्लोप, तो स्लोप किसका कम है? Q1 और Q2. Q2, तो ये अल्फा हो गया. इज इट क्लियर? हम एम क्यू निकाल दिए. एम क्यू ज़्यादा हुआ तो स्लोप कम. स्लोप समझ रही है एंगल, ये एंगल. तो स्लोप किसका कम है? अल्फा पार्टिकल. इस टाइप क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है. एटलीस्ट राइट द फॉर्मूला यूज्ड, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट.